everyone. आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा what are the major roles of the MBA that जो MBA students है वो आई करते हैं, right? So what are those roles where you want to get into? What are those roles which pays you a lot of money after your MBA is complete? So in today's video we'll talk about what should you target basis. कौन से स्ट्रीम पे आप जाना चाहते हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, डू यू वांट टू गो इनटू स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस, एचआर, व्हाटएवर इट इज, हाउ आर द फेमस रोल्स पोजीशन एंड उसमें एवरेज सैलरी कैसी रहेगी. एक चीज मैं छोटा सा आप लोगों को बता दूं बिफोर आई टॉक अबाउट सैलरीज. दीज नंबर्स आर एवरेज फिगर्स, राइट? सो टिपिकली एक अच्छे बी स्कूल से अगर आप पढ़ते हो, ये वाले सैलरीज आपको मिलने के चांसेस बहुत हाई रहती है. एंड बेसिस द school ranking and everything, by that I mean the business school ranking and everything, the salaries might differ. So please don't go कि अत्रिया सर ने तो बोला था 18 लाख मिलेगा, मुझको 16 लाख मिला, अब तो मैं I'll not consider this. ठीक है, so ऐसा नहीं है. चलिए, so डिस्कस करते हैं क्या करेंगे. पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिपेंडिंग अपॉन योर मेजर्स, मार्केटिंग है, एचआर है, फाइनेंस है, डिपेंडिंग अपॉन दैट कौन से मेजर रोल्स होते हैं, उनका जॉब टाइटल टिपिकली क्या होता है, एंड देन विल आल्सो टॉक अबाउट सैलरीज. So let's talk about marketing and finance. दो बहुत ही बड़ी मेजर्स हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं. So marketing का अगर मैं बात करूँ, what are the typical roles that are offered in placements? The first role that you can think of is a business development manager, or area sales manager होता है, sales manager, typically a role around sales. So अगर आपको sales पसंद है, अगर आपको बेचना आता है, so this is a role that you can very well get into. टिपिकली सेल्स में आपको ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है. जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी है, बट सेल्स के रोल पे आई होप ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट नो अबाउट दिस, वेरिएबल पे भी थोड़ा सा रहता है ना, कि अगर आप अपने टारगेट्स मीट करो तो आपको इतना पैसा मिलेगा, अगर नहीं मीट करो तो शायद पूरा पैसा नहीं मिलेगा. सो पार्ट ऑफ योर एंटायर component is variable as well. The other role which recently is gaining a lot of traction is product management ka role. Over here, I hope all of you already know what a product manager does. They're called the mini CEOs of companies, क्योंकि जो product है वो पूरा end to end manage वही करते हैं. वो समझते हैं कि कैसा customers को perceive कर रहा है, क्या क्या changes करना पड़ेगा, data क्या बता रहा है, everything. So start to end जो management है वो एक प्रोडक्ट मैनेजर करता है. सैलरी भी काफ़ी हैंडसम है. इफ यू कैन सी, वन ऑफ द टॉप पेइंग जॉब्स आफ्टर MBA is of a product manager. Then you get marketing manager. It might be around data analytic tools, it might be around digital marketing, it might be around how to strategize your entire marketing funnel ताकि आप customers बढ़ा पाओ अपनी कंपनी के लिए, right? थोड़ा सा लेसर है सैलरी विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से गुड सेल्स रोल्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स, बट इट्स अ वेरी फैंटास्टिक जॉब एंड बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस जॉब में. सो दिस इज अबाउट मार्केटिंग. लेट्स मूव इनटू फाइनेंस. नाउ फाइनेंस में you have the roles of financial analyst या account manager. Now financial analyst क्या करता है कि typically he or she they identify opportunities and then they evaluate कि कोई भी business decision और recommendation को आप कैसे take forward करो, कैसे आगे लेके जाओ, investment कैसे करनी है, strategize कैसे करना है, all of that is what a financial analyst does. What about account manager or let's say a financial manager? वो ये देखता है कि जो essential financial structures है, आपका जो strategy है, is that working well or not? आपका P&L maintained है क्या, सही से करना पड़ेगा, where can you save money, and all of that is something a financial manager takes care of. Then you have risk analyst and credit management के roles, जहाँ पे typically आपको ये समझना पड़ता है कि जब आपको let's say risk data मिलता है कि these are the areas where the company might typically have risks, you have to evaluate that, analyze that, and get find out कि आपको क्या क्या steps लेनी पड़ेगी, क्या strategies लेनी पड़ेगी ताकि solution आप निकाल पाओ सारे problems के. So that is one very interesting role gaining a lot of traction, right? Of credit manager and risk analyst. This is something that good financial companies offer. थोड़ा सा niche role पे ये माना जाता है because not a lot of
companies offer you this position. So a great way or a great career to start with. The other part, investment banking. आप सबको तो पता ही है, IB is one area जहाँ पे you know lot of people try to get into जो finance में die hard finance fans हैं, right? They work around M&As, IPOs, what not. But मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, पैसा बहुत मिलेगा आपको इस जगह पे, बट वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ा सा कहीं कहीं जगह पे कुछ कुछ कंपनीज पे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो सकता है. बट इट्स अ फैंटास्टिक रोल, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ही उम्दा है. सो इफ यू आर इनटू फाइनेंस, आप आराम से इस रोल पे जा सकते हो. एंड इफ यू हैव सर्टिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल CFA अगर आपने कर रखा है, so they also help you getting in these roles as well. Let's talk about operations and strategy. Now, operations and strategy, you'd find roles around project management, program management. Typically क्या होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनीज के, राइट, उनको मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए. एनीवन हु इज केपेबल इनफ टू मेक श्योर कि टाइमलाइंस मीट हो, जो डिलीवरेबल्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए. सो ऑल ऑफ दैट is a part of operational roles. Salary भी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत सीखने को मिलता है. It's a lot of cross team work. आपको बहुत सारे शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर से बात करना पड़ता है. You need to report to a lot of people. You have a lot of people to take feedback from. So if you are someone who can work around with a lot of people from different teams, this is a very good role to get into. The other typically around तुम्हारा hardcore operations हो जाता है logistics manager and warehouse management की, जहाँ पे you have to understand कि supply chain मेरा कैसा काम कर रहा है, if everything's working fine, warehouse में what's their intake, what's going out, so all of that needs to be managed. थोड़ी सी कम सैलरी है, बट अगेन ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी. लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट का स्कोप आउटसाइड ऑफ इंडिया इज आल्सो वेरी हाई. So that's one area where a lot of students have seen get into. The other is supply chain manager. थोड़ा सा similar है logistics manager के perspective से ही, but then supply chain manager से आप companies like Zomato, Swiggy, जहाँ पे you deal with commodities or typically day-to-day activity, day-to-day life में जो हम use करते हैं. Very simple examples can be food, vegetables, groceries. All of these are also very areas where a lot of hiring is taking place at the moment, because आप सबको पता है कि a strong supply chain is the backbone of a business, right? So if you are good at this, then this is a very good job for you. Then let's talk about human resource. Now, बहुत लोगों को मैंने सुनते देखा है कि अगर आप HR बने हो, then तो आपको रंगोली बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए. All of that is वो बहुत पहले होता था. Times have changed immensely. I've seen so many HR people doing wonderful job for their companies, right? जो टिपिकल रोल्स होते हैं वो HR मैनेजर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर होता है. HR मैनेजर तो आपको पता है, टेक्स केयर ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैनेजर थोड़ा सा अलग टाइप का रोल है, जहाँ पे यू डिज़ाइन, यू प्लान, आप ये सोचते हो कि कैसे कोई कंपनी एम्प्लॉयज़ को अच्छे से रिटेन कर पाए. जो पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होती है, वो सारा कुछ आप डिफाइन करते हो. So it's a much strategy-based role rather than more of an execution kind of a role. And then आता है आपका HR consultant. Now HR consultant का role बहुत ही अच्छा होता है, where you become a consultant for any of our big companies, and then you get to travel a lot. बहुत ही अच्छा काम है. यहाँ पे आपको it's not more of a text job. It's more about going out, talking to a lot of people, helping more companies, become better at their employee management, and that's the reason it also pays you really well. Not a lot of people get into HR consultant because उतनी ज़्यादा recruitment इस पे होती नहीं है, but अगर आप HR consultant बन जाते हो, the possibilities of climbing up that ladder becomes very, very easy. Right, so this is what I wanted to share with all of you. आपने अभी सारे एग्जाम्स दिए हैं, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि where do you essentially want to get into. क्या आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, फाइनेंस में जाना चाहते हो, if there is anything else that you want to get into. So that is one thing that I would always suggest you to take a look at. So, and if you like this video, अगर आपको ये information अच्छा लगे, please make sure
एक बार press the like button. I'll be making more videos around how to make decisions during your MBA life. आप resume कैसे बनाओगे, and lot more other topics which I'll create one by one and share with all of you. And I hope all these really help you make decisions more easier. If you have any specific question or doubt कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं पता कि मुझको क्या करना है, write that in the comment section, and if I get time, I'll also try to create a video on that as well. Till that, take care of yourself and have a wonderful day. Bye-bye. What happens if you bang your head against the wall? Certainly one thing will crack, and it will not be the wall. Preparing for CAT is very similar. Unless you have the right plan and the tools, cracking CAT may not happen. We at ExpertsEdge therefore are having a webinar on 8th of this month at 5 p.m. to help you answer your questions so that you can have that plan ready to crack CAT. What kind of questions? When you should start, what should be the right strategies, etc. etc. So if you're serious about CAT, make sure to attend this webinar. Registration link is in the description below. Hope to see you there.